हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद माय फोर्थ वीडियो। मुझे पता है मैंने एक हफ्ते से कोई पोस्ट नहीं किया है, बट मेरा जॉब थोड़ा सा बिजी चल रहा था। एज आई टोल्ड यू, आई वर्क विद फिलिप्स इन द इंडस्ट्री कंसल्टिंग डिपार्टमेंट। आई एम अ कंसल्टेंट इन फिलिप्स. Let's not go in my job because this blog is about my hobby and about my passion, which is investing in stocks. मैं अब तक 3 वीडियोस पहले डाल चुका हूँ और उन सब वीडियोस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि मैं क्यों ये ब्लॉग बना रहा हूँ, और मेरा पर्पस क्या है इस ब्लॉग के थ्रू, आपको क्या बताने का मेरा पर्पस है। मैंने आपको थोड़े से स्टॉक टिप्स भी दिए जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लगते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बाय देम, आई एम जस्ट सेइंग यू शुड एक्सप्लोर दोज स्टॉक्स, नॉट नेसेसरली टू इन्वेस्ट बट जस्ट ऑल्सो मे बी टू लर्न। क्योंकि जो मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ वो आप इन्हीं स्टॉक्स में नहीं, किसी भी स्टॉक में अप्लाई करके आप उस स्टॉक को खरीदने या बेचने का डिसीजन ले सकते हैं। जस्ट एज अ रीकैप, मैंने आपको बताया था पहले भी, मेरा ये जो चैनल है, दिस इज डेडिकेटेड टू राकेश झुंझुनवाला, क्योंकि मैं उन्हीं की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी फॉलो करता हूँ। लार्जली मैंने उनसे जो जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो स्टॉक्स हैं, मैं उनको बहुत क्लोजली स्टडी करता हूँ। Plus, on top of that, I am also inspired from the investing principles of Peter Lynch and Warren Buffett and many others who basically propose value investing. As I said, it's not for speculation. अगर आप ऐसा कोई चैनल फॉलो करना चाहते हैं जिसमें आप ये चाहते हैं कि आपको स्टॉक टिप्स मिलें जो आज बढ़ेंगे या कल गिर जाएंगे, दैट इज नॉट द केस। मेरा चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है, और लेट मी टेल यू, long term investing is the only way in which you can actually end up making money. It's just not possible to make money by speculating. वो सट्टे की तरह है, आप कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, but you will never succeed by just doing that. आपको अगर सक्सेस चाहिए फाइनेंशियल मार्केट्स में, then the only way to succeed is to take a look at your stocks closely, go through their financial records, go through their investor presentations, or if they have investor calls, listen into them, and then make a decision whether it's a good company to invest in not. मैं जैसा मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो इंडस्ट्री कौन से सेक्टर में काम कर रही है, वो हाउ इज द मैनेजमेंट, हाउ लॉन्ग हैज द मैनेजमेंट बीन विद द कंपनी, इज द कंपनी जनरेटिंग इनफ कैश, एटसेट्रा। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, एंड आई होप कि मैं ये सारे प्रिंसिपल्स आपको धीरे धीरे सिखा पाऊँ, सो दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी सो कॉल्ड स्टॉक टिप्स जो कि आप आजकल सारे बिजनेस चैनल्स पे देखते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आई पर्सनली फील those are absolutely useless. They do not give good value investment guidance. उस टाइम पे जो भी बजिंग स्टॉक्स होते हैं, जो भी पॉपुलर स्टॉक्स होते हैं, वो उन्हीं को कवर करते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स द वे टू इन्वेस्ट। द वे टू इन्वेस्ट इज टू फाइंड अ स्टॉक which is not really in the limelight, और उसमें इन्वेस्ट करें ताकि जब वो ग्रो करे और लाइमलाइट में आए, then you can encash and leave. So that's the principle we would be working on. As a recap of my previous video, the immediate video before this one, उसमें मैंने कुछ terms introduce करी थी, price earning ratio, and I think it was earnings per share, and it was also I think book value of a share, etc etc. So आज हम थोड़ा सा इनमें डिटेल में जाएंगे, and we will help you decide on how to use them in your investment decisions. मैंने जो लास्ट टाइम 3 स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए थे, येस बैंक, ईडलवाइस एंड आई थिंक इट वाज पीएनबी, उनमें भी अगर देखें तो सिर्फ एक हफ्ते में ईडलवाइस हैज रिजन बाय ऑलमोस्ट 15%, येस बैंक हैज रिजन बाय आई थिंक 4 or 3.5%, and PNB has also risen by roughly 6.5 or 7%. So एक हफ्ते में इतना ग्रोथ हुआ है, and I still recommend that these are good stocks to invest even at these values. So अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, these are the stocks that you can definitely look for. आज के वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने एक और स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया वो मैंने क्यों सेलेक्ट किया. So this will be one more tip from this video, and I'll give you the story behind that stock कि मैंने वो क्यों सेलेक्ट किया, किस बेसिस पे सेलेक्ट किया. So let's dive straight into it, and I'll start with a recap of the terms that I mentioned earlier in the video. So let's start with first, price earning ratio. As the name suggests, price earning ratio is the ratio of
the price of a stock versus how much earning it makes in a year. To give you an example, अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है आज की डेट में एंड उसका अर्निंग पर शेयर 5 है, then the price earning ratio or PE ratio as we call it is 100 divided by 5, that's 20. नाउ दिस इज रियली सिंपल, बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक अच्छा स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, मतलब शुड इट बी अ वैल्यू लेट्स से closer to 1 or should be a value closer to 100? तो द आंसर इज प्राइस अर्निंग रेशियो. लेट मी फर्स्ट टेल यू द लॉजिक. अगर किसी स्टॉक का प्राइस बहुत हाई है लेकिन उसकी अर्निंग बहुत कम है, इसका ये मतलब है कि वो कंपनी जो है वो उतना पैसा नहीं बना रही है. लेकिन हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जिनमें हमें बहुत सारा हु मेक डिसेंट मनी, सो दैट उन कंपनीज के स्टॉक में अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो मेरे स्टॉक की वैल्यू बढ़े, बिकॉज आई वांट कंपनीज टू मेक मनी. इफ कंपनीज मेक मनी देन द स्टॉक वैल्यू ऑफ माय स्टॉक वुड इंक्रीज. तो इसीलिए आई इन एन आइडियल सिनारियो प्राइस कम होना चाहिए स्टॉक का और अर्निंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए. मतलब द रेशियो शुड बी रियली रियली स्मॉल. इवन इफ इट्स लेस देन 1, दैट्स इवन बेटर. बट द आई इन एन आइडियल स्टॉक द प्राइस अर्निंग रेशियो शुड बी स्मॉल. I use price earning ratio as one of the filters that I apply. If the price earning ratio of a stock is more than 30, I don't even look at that stock. आप भी ऐसा एक फिल्टर आप चूज कर सकते हैं. यू विल लर्न इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी कि ये रेशियो कितना होना चाहिए. बट एज आई सेड, I start looking at 30 and then I keep moving down. If it's below 5, then I already feel it's a very good ratio and those are serious stocks. The second topic, which is earning per share. Now, earning per share is basically uh, अगर कंपनी के 1000 शेयर्स हैं मार्केट में, 1000 लोग डील कर रहे हैं उसके शेयर्स में और सबके पास एक एक शेयर है, सो दैट्स 1000 शेयर्स आउट इन द मार्केट. And the earning of the company is, let's say, for example, 1000 rupees, then earning per share is 1000 rupees divided by number of shares, which is 1000, so that's 1. So earning per share is 1. Now ideally earning per share, as I already explained, should be high, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे हर शेयर पे बहुत हाई वैल्यू बने. तो इसीलिए earning per share number should be as high as you can potentially imagine. So if if it's higher, then it's better. If it's lower, then it's not so good. Then coming to book value, इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था. Now let's go slightly more in detail. Book value is basically आपकी कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं. अगर बुक वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आज वो कंपनी बिकती है तो वो कितने में बिकेगी, और उसको नंबर ऑफ शेयर्स जो है कंपनी के, आउटस्टैंडिंग शेयर्स एज वी कॉल देम, उससे डिवाइड कर दो. सो आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स लाइक यू एंड मी. सो मान लीजिए किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं, लेट्स कंटिन्यू विद द ओल्ड एग्जांपल, और आज वो कंपनी अगर बिकती है और वो बिकती है 10,000 में, so book value per share is 10,000 divided by 10 divided by 1,000, which is 10. So that's the book value per share. So by and large, these are the three concepts which I use for identifying. क्योंकि आप जानते हैं कि there are thousands of stocks out there. हम हर स्टॉक को स्टडी नहीं कर सकते हैं. मैं इन तीन पैरामीटर से शुरू करता हूँ. What I do is I basically start looking at companies which have a book value which is अबाउ देयर शेयर प्राइस. सो अगर कंपनी का स्टॉक 100 रुपए का बिक रहा है, बुक वैल्यू 100 से ऊपर है, दैट्स आइडियल, बिकॉज देन इट्स नॉट अ रिस्की प्रोपोजिशन. अगर वो कंपनी बिक भी जाती है तो आई विल स्टिल एंड अप रिटेनिंग माय रिसीविंग माय बुक वैल्यू होपफुली. सो बुक वैल्यू पर शेयर should be more than the price of the share. The second is price earning ratio. As I said, 30 is the threshold. I do not go beyond that, but I start looking at companies which are in the range of 5 to 10. So that's the price earning ratio that I take a look at. And then earning per share. What I do is earning per share should be at least 5% of the price of the share. That's my criteria. So these are three criteria. आप भी अपने में apply कर सकते हैं. Now coming to the last recommendations that I made, Yes Bank, Edelweiss,
and Punjab National Bank. I still feel, as I said in the last video also, these are all financial sector stocks, and right now, many of the financial sector stocks are undervalued. There are also some which are super overvalued. So, for example, Bajaj, Finserv, that's extremely high valued. I would not enter that, although it's a stock which has been rising continuously. But I don't think that is the time to enter in that stock now. The time to enter is for these three stocks. These are really down and beaten out, and now is the time when you should enter such stocks if you feel they're good stocks. Now, going back to the three stocks, as I said, PNB or Yes Bank, they are both basically government owned right now. PNB is a government bank. It will never fail. Its stock price is at an all-time low. Its numbers are improving, not and its NPA is already improving, and it's basically a good time to enter this stock. Coming to Yes Bank, Yes Bank has the backing of SBI right now. SBI is one of the biggest stakeholders, so SBI is not going to allow Yes Bank to fail, at least not till the time Yes Bank is bought over by a private company. That process has already been kicked off. I have a feeling till Yes Bank goes completely off from SBI's hands, the stock price is going to continue to rise. And then maybe when the time comes, I will reevaluate the stock and then recommend whether to stay with it or not. And lastly, Edelweiss. Edelweiss is a very good company. The CMD is a Ahmedabad grad. His team is comprised of people who have been with him for around 20 years since the time he set up Edelweiss. So the management has a really long and wide experience, all from prestigious colleges from within India and outside, like IITs and IIMs, and also from outside like Stanford, etc. So it has a very good management, dedicated people who have been around with the company, and now the company has also sold off a few of its stressed businesses. So now it's starting afresh, and that, in my view, is an indication to buy this stock. I would continue with this stock. Now coming to the last part of this video, my recommendation for this video as a stock that you can think of, Time Technoplast. Let me tell you the story behind this stock, why I bought this. Now, Time Technoplast is a really small stock. It's not a famous stock. I don't think many of you would have heard about it. It's also not covered by most business channels out there. But there's a catch. It's a really old company. It has been around for 3 decades or maybe even more. I don't know, but I know that it has been around since early 90s. The founder of the company, he had started this company off after leaving his government job because he saw the potential of taking a lot of contract work that the government was doing back then, and there was good profitability in that. So he started this company with 4 or 5 of his ex-colleagues, also from government. Now imagine in the 90s, 5 or 6 senior people leaving their plush government jobs to start a company. They must have seen some value, in fact, a lot of value, because back then government job was gold standard. So that's one. The conclusion I drew was that they were all driven people and they were all smart people, because not everyone got a government job back then. So that validated the point that it's a good management. Now, coming to the second point, the company manufactures things like plastic drums, like a lot of plastic containers used in packaging, etc. You remember these blue drums with black tops? Nowadays, everything in the petroleum and chemical industry is transported in these drums. Now, petrochemicals is basically a growing business. It will continue to grow in the near future. Imagine your fuel, imagine your engine oils, etc. Everything comes in these drums. So that's a stable business. So the second thing I concluded about this company was that it's in a very stable business. Coming to the third point, मैंने थोड़े दिन पहले इस कंपनी की एक रिपोर्ट देखी थी, जो इनकी वेबसाइट पे ही आई थी, जिसमें दे सेड दे आर द पायनियर्स इन डिजाइनिंग प्लास्टिक बेस्ड गैस टैंक्स. जो हमारे एलपीजी सिलेंडर्स आते हैं या ऑक्सीजन के गैस टैंक्स आते हैं, they are
converting all these gas tanks into plastic based tanks, and they have received all the necessary approvals from legal authorities to transport gas in these containers. Now imagine एक मेटल का एलपीजी सिलेंडर वर्सेस अ प्लास्टिक का एलपीजी सिलेंडर, कितना बड़ा डिफरेंस होगा वजन में. It will drive transportation efficiencies. So it's a very good product minded. So as soon as I saw that they were working on such a product, and I realized that this product is potentially something which can basically transform the entire LPG gas transportation business or oxygen gas transportation business, I realized this is a good company to invest in. Then coming to the fourth and final point on my selection of this, it's a bit sad, but I would be honest with you, I made my decision based on that. मैं इस कंपनी को लास्ट ईयर अक्टूबर से ट्रैक कर रहा था, और फरवरी में अचानक इस कंपनी के जो एमडी थे, मिस्टर जैन, ही पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक. नाउ ऐसा जब जब ऐसा होता है, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स कंपनीज ऑफ दिस साइज, बिकॉज इट्स अ स्मॉल कंपनी, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बिजनेस, क्योंकि उनकी लीडरशिप खत्म हो जाती है. एंड सो मार्केट को भी ऐसा ही लगा था कि दिस कंपनी वुड स्ट्रगल, एंड इट्स स्टॉक प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग सिग्निफिकेंटली. हाउएवर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कंपनी मिस्टर जैन ने अपने 4-5 एक्स कॉलीग्स के साथ शुरू कर दी, जो कि इस कंपनी के साथ बने रहे हैं फॉर सो लॉन्ग, फॉर ऑलमोस्ट 30 years. So I knew that there is already management in place, and so it's not likely that the company would flounder. Company struggle नहीं करेगी, because there's a second tier management beyond Mr. Jain, who can take over the responsibilities and basically propel the company further. इसीलिए I was pretty sure that this company would grow, and I bought its stock. And if you take a look at this stock today, from February, this stock has risen by almost 70%. That's a huge jump, and for me, that's a huge profit. Now, these are the type of things that I look for in a company or in a value stock, and these are the type of things that I would try to teach you in my videos going forward. And I hope you can learn and benefit from my experience and my understanding of the stock market. So, if you like this video, please do not forget to subscribe, to like this video, and to comment. If you have any questions, please feel free to comment. I would try to respond to everyone's comments. And thanks for watching. And my next video would be sooner than the last one. Thank you. Have a nice day.